We are in verse number 22. This section describes the instruction of Supreme Lord to Devrishi Narad. Sakkad yadadarshittam rupam etad kamayate anagha mata kama sankai sadhu sarvan munchate dasha. Sakkad means once only, just once. Yad darshitam rupam, one was seen my form. Etad kamaya te anagha. Anagha means free from sin. You, Narada, you have a desire to see me, you saw me only once. This only seeing once, matakama sankai sadhu. Matakama sankai sadhu. It will increase your desire to see me more. Sarvan munchate hardacham, and then you will be free from all the material desires. O virtuous one, virtuous is for which word? Anag. O virtuous one, you have only once seen my person, and this is just to increase your desire for me. Because the more you hanker for me, the more you will be free from all material desires. O sinless Narada, Ananga. But just you show yourself once more to me, Narada is saying. Chakravarti is asking this question. Ek baar aur darshan de do. Seeing me only once, not many times, is enough to produce desire for me, kamaya. By only slight increase in longing, prem will not develop to the state of youthfulness in a person having somewhat weak prem, which means you are in a sadhak deh, practicing body. You are a child. So, when you mature, then you can see me again in your siddha day. My rule is that I show myself one time only to person practicing in his present body, in his sadhak day. आप सब भी साधना कर रहे हो, आपको कभी भगवान ने ऐसे दर्शन दिया? All of you must have at least once tasted ecstasy in kirtan, sometime only in darshan, sometime in prasad only. Everybody always get once a glimpse. In kirtan you become so ecstatic you never had before. Sometimes you are reading, you cry. Sometimes you are seeing the deities, you have a completely different experience. Krishna gives everybody some taste. Why? To increase the hankering. Everybody has some little experience. सबको थोड़ा सा भगवान ऐसा एक चस्का दे देता है taste that we can continue our devotional service with eagerness and hankering. Who has developed prem? The infant state of prem is in sadhak body. इसको प्रभुपाद जी कहते थे कच्चा आम. आम तो आम है, कच्चा है, और जब भगवत धाम जाएंगे तो पक्का रसीला आम हो जाएगा. तो साधक देव में प्रेम कच्चा है, सिद्ध देव में प्रेम पक्का हो जाएगा. The infant state of prem is in sadhak's body, matures to youthful state in siddha body. There, by an increase of prem arising from longing and separation. आपको जितना मेरी जुदाई होगी उतना प्रेम बढ़ेगा तो आपकी देह सिद्ध हो जाएगी. That youthful prem allows the devotee to see me constantly and serve me directly. तब आप हर समय मुझे देखोगे, मेरी सेवा में लग जाओगे. I alone and not my devotees know the process of fulfilling the desire of my devotees.
मैं ही जानता हूं मेरे भक्तों की इच्छा पूरी करना. You who simply desire me, mat kama, even without having seen me, will become free from all desire for material enjoyment. Hirtashyam, Hirtichan. This statement does not actually apply to Nag, since he did not have any material desires. Being at the level of prem already, but saying this, the Lord shows the nature of devotion. Additionally, by saying this, the Lord increases the humility of Nag. तो अब उन शब्दों के ऊपर आते हैं. अपक्व, विपक्व, आप पक्के नहीं हो और कषाय लामना है. तो इसके लिए इस पर चक्रवर्ती पाद को पढ़ने के बाद ऐसे लिखना समझना चाहिए. नारद एक्चुअली हैज नो मटेरियल डिजायर्स. ये लिखा है ना, नारद हैज नो मटेरियल डिजायर्स. बीइंग एट द लेवल ऑफ प्रेम ऑलरेडी. कौन सा प्रेम है नारद का? वैदी साधक भक्ति का वैदी साधक प्रेम. आगनुभव वाला नहीं है नारद, वैदिक साधी भक्ति वाला है. बट बाय सेइंग दिस द लॉर्ड इंक्रीजेस ह्यूमिलिटी. भगवान ने कहा तुम कच्चे हो, तुम में अभी कुछ कचरा है. इससे नारद में हम्बलनेस भगवान बढ़ाना चाहे. व्हाई लॉर्ड सेज टू शो हिम humility, number one. However, Nag's infant state of prem in the sadhak dehe has to mature to the youthful state of prem in the siddha dehe, in longing, in separation. So भगवान दोबारा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ताकि विप्रलंबा भाव से उसका प्रेम मेच्योर हो जाए और सिद्ध देह प्राप्त हो जाए. साधक देह से सिद्ध स्थिति को प्राप्त. That youthful prem allows the devotee to see Lord constantly and serve him directly. Exactly, चक्रवर्ती पाद के ये भाव. नारद is already at the stage of prem. So उसकी कमजोरी क्या है? अभी साधक देह में है बस, और सेपरेशन उसको मैच्योर करेगा. श्री प्रभुपाद लिखते हैं, A living being cannot be vacant of desires. He is not a dead stone. He must be working, thinking, feeling, and willing. But when he thinks, feels, and will materially, he becomes entangled. And conversely, when he thinks, feels, and wills for service of the Lord, he becomes gradually free from all entanglement. Simple philosophy. The more a person is engaged in the transcendental loving service of Lord, the more he acquires a hankering for it. That is the transcendental nature of the godly service. Material service has satiation, whereas spiritual service of the Lord has neither satiation nor end. One can go on increasing his hankering for the loving transcendental service of the Lord, and yet he will not find satiation or end. By intense service of the Lord, one can experience the presence of the Lord transcendentally. Therefore, seeing the Lord means being engaged in his service, because his service and his person are identical. The sincere devotee should not go on with sincere service of the Lord. Sincere devotee should go on with sincere service of the Lord. The Lord will give proper direction as to how and where it has to be done. There was no material desire in Nag, and yet, just to increase in intense desire for the Lord, he was so advised. So what Prabhupada is writing is, serving Lord is seeing Lord. सेवा में लगो तो भगवान का दर्शन सेवा है. तो सेवा ही साधन है, और जितनी सेवा करें. The other thing Prabhupada saying in service of the Lord, there is no end, and one is never satiated. थक नहीं जाता, पूरा हो गया ऐसा नहीं है. आनंदाम बुद्धि वर्धनम, it is increasing and increasing. It's not that it ends. So Bhagavad Prem increases and increases and increases. So the whole idea is, Narada was advised that he will not be able to see Lord again to increase his vipralamba bhav.
and to make him humble. Though he is already at the stage of prem, but it was prem in a sadhak deha, practicing body. By separation and hankering, he will get mature prem and a perfect or siddh body, सिद्ध देह. ये चक्रवर्ती पाद का भाव है. और उसमें गुडनेस, Bharadwaj has a goodness of forest. Now he anywhere and everywhere he can do that when he is in siddha deha. So you can put together both and make the whole thing. Verse 23. Not exactly. All our नेक्स्ट ऑफ डिवोशन में आप देखो, साधक रूपेण सिद्ध रूपेण. हमारी डिवोशनल सर्विस देखने के लिए बाहर साधक के रूप से करें और अकेले में बैठ के सिद्ध देह से भगवान का चिंतन करें. हमारे आचार्य है, नॉर्मली तो संख्या पूर्वक नाम गानन साधक वाला काम कर रहे थे, लेकिन अपना मंजरी भाव से भगवान का चिंतन भी कर रहे थे. तो सिद्ध देह जीते जी प्राप्त होती है, उसको कहते हैं प्राप्ति दशा, आपन दशा. आपने नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ा है, श्रवण दशा, मनन दशा. ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती की कमेंट्री जो है, पहले सुनना, श्रवण, फिर मनन, और उसके पास ध्यान है, फिर आपन दशा, प्राप्ति दशा, जब अपना सिद्ध देह मिल जाता है. उस सिद्ध देह में जाके राधा कुंड पे रहे तो एक बार स्नान करने से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, लेकिन साधक देह में नहीं मिलेगा, सिद्ध देह में मिलेगा. तो ये लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपको भक्तिसिद्धांत सरस्वती का पढ़ याद है, इफ यू रिमेंबर. श्रवण दशा, मनन दशा, वर्ण दशा, ऐसे these are the different stages. तो सिद्ध देह जीते जी प्राप्त की जा सकती है. और ये नारद जी की सिद्ध देह स्पिरिचुअल बॉडी उनकी जो अब इस वक्त है वो, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबको सिद्ध देह होगी तभी उधर जाएंगे. So next verse 23. सतसेवया अधिग्रह्यापि जाता मयि दृढ़ा मति हित्वादयमिमं लोकं कंतामसि मज्जन्तामसि. By service of the absolute truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me, mati, dridha mati. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material body. चक्रवर्ती पाद इसको थोड़ा अलग लिखते हैं. By serving the devotees, प्रभुपाद लिखा भगवान के लिए, और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं by serving the devotees for even a short time, your intelligence becomes firmly fixed in me. When you give up this body of low birth, you will become my associate. So, सत सेवया, सत सेवया का दोनों अर्थ हो सकता है. सत भक्तों को भी कहते हैं, सताम प्रसंगाम. सताम का मतलब भक्त, जो सत्य के अनुयायी है. सत्य इज आल्सो फॉर डिवोटी. और सत्यम परम धीमहि, वहां सत्य भगवान के लिए भी है. सो सत्य कैन बी यूज फॉर डिवोटी एंड सत्य कैन बी यूज फॉर एब्सोल्यूट ट्रुथ. प्रभुपाद ने सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ के लिए यूज किया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती सत्य यूज किया डिवोटी के लिए. Practically, it is the devotee who gave us devotion. तो devotee की सेवा से थोड़ी भी devotee, by serving the devotees for even a short time. अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, by serving the devotees for even a short time. अधीर गया, मतलब नहीं, दीर्घ गया मतलब लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, शॉर्ट टाइम, अधीर गए. You developed a strong intelligence in me, Dridhamati. Giving up the low body, avadyam lokam, you will become my associate, majjantam. Srila Prabhupada likta, serving the absolute truth means rendering service unto the absolute person of Godhead under the direction of bona fide spiritual master, who is the transparent medium between Lord and the neophyte devotees. Prabhupada ने सताम के दोनों अर्थ लिख दिए, भगवान और भगवान का प्रिय भक्त.
भगवान का प्रिय भक्त ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, इसका क्या अर्थ है? What is the meaning of transparent via media? Spiritual master is transparent via media. हाँ, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया का मतलब क्या है? इसके ऊपर बनाना का प्राइस है तुलसी के साथ। भगवान के मैसेज हमारे पास ऐसे पहुंचा है, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो, ये वन वे हुआ। He has no personal agenda. जो सर्विस प्रोवाइड होगी, जो साधक करेगा तो मास्टर के थ्रू उनको भगवान को पहुंचेगी। अब थोड़ा ठीक कह रहे हैं, जो हमारी सेवा भगवान तक पहुंचाए और भगवान की कृपा हम तक पहुंचाए, दोनों के लिए ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया के ऐसा शीशा जिसके द्वारा भगवान की कृपा परंपरा से हम तक पहुंचे और हमारी सेवा गुरु के माध्यम से परंपरा से भगवान तक पहुंचे, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। आपका बनाना हो गया। इधर तुलसी कहीं होगी, देख लो भाई, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। चरण तुलसी है जी। वैसे था 50-50 देना था, चाहिए था टुकड़ा, पूरा दे दिया। चलो ठीक है। तो Prabhupada has used shastra for both the Lord and the spiritual master, which means devotee, for both. The neophyte who has no ability to approach the personality of Godhead by the strength of his present and perfect material senses, and therefore under the direction of his spiritual master, is trained in trans-loving service. It means by rendering service to the devotee, we can advance. And by such training, even for some days, the neophyte devotees get intelligence and such a transcendental service, which leads him ultimately to get free from perpetual habitation in the material world and to be promoted to the transcendental world to become one of the liberated associate of Lord in the kingdom of the God. Small service to the devotees, one will go back to Godhead. Some example, थोड़ी अचानक सेवा की और बहुत बड़ा लाभ मिला, भगवत धाम चला गया। हाँ जी, अजामिल किसी तरीके से भगवान की थोड़ी सेवा पहले की थी नारायण की और बड़े से खतरे से बच गया। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और कोई ऐसा एग्जाम्पल है थोड़ी भक्तों की सेवा की हो? भगवान खटवांग महाराज तो 2 घड़ी में भगवत धाम चले गए, देवताओं के कहने के ऊपर भगवान को पा सकते हैं। वो देवताओं की सेवा की, वो भी वैष्णव है, ठीक है। और परीक्षित महाराज तो जन्म से भगवान के भक्त, दर्शन करके ही आए थे। वो तो माँ के गर्भ में मंगला आरती करके आए थे। He was already liberated soul. गिलहरी और थोड़ी सी भगवान की सेवा की, मुक्त हो गई। कुछ आप और देखें, भक्तों की थोड़ी सेवा करने से किसी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। जा रहे थे जल पोत से, उसके बाहर प्रभुपाद जी हाथ हिलाना होता है। प्रभुपाद जी वहां जाके हाथ हिला रहे थे, दूसरे साइड कोई स्विफ्ट था, उसके कर्नल ने देखा, लेकिन सोचा कौन हाथ हिला रहा है, तो इतना देखा। और बाद में अमेरिकन प्रभुपाद की फोटो छप गई, उसने देखा यही स्वामी हाथ हिला रहा था, कौन आखिर है। तो मिलने गया, मिलकर प्रभुपाद जी के दीक्षित भक्त बन गए। ऐसे तो थोड़ा ही भगवान के भक्तों का संग करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। भक्त बन जाता है तो अपने आप मुक्त हो जाएगा।
तो आप कहते हैं वो उससे प्रभुपाद से मिला और शिष्य हो गया। ऐसे एक प्रभुपाद के जीवन में एरोप्लेन में जाती हुई स्टीवर्ड से वो थोड़ा पफ राइस खाया, वो भी भक्त बन गई। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण आपको जीवन में मिल जाएंगे भक्तों की सेवा से। अब आगे का श्लोक, मतिर्मयि निबध्ये मा न विपद्येत करचित् प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृति च मद अनुग्रहात्। ये 24वां श्लोक है आंसर, कैसे नारद की स्मृति दूसरे जन्म में बनी रही। Intelligence engaged in my devotional service cannot be thwarted at any time. इसको कहते हैं सती मति। मति, यह शब्द मति है ना, मति मयि निबोधयम, निबद्धये ना, जिसकी मति भगवान में सदा लगी रहती है। बुद्धि, even at the time of creation, sarge, or at the time of annihilation, sarge, praja sarge nirodhe, nirodhe means annihilation. Your remembrance will continue by my mercy, mad anugraha. Your concentration on me will not perish because it has been fixed upon me by prem. इसका मतलब जब प्रेम भक्ति के ऊपर कोई पहुंचता है तो फिर उसकी स्मृति नाश नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं रहता है, तो उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, प्योर कॉन्शियसनेस हो जाती है। बिकॉज आई एम एटर्नल, द रिमेम्बरेंस ऑफ मी इज आल्सो एटर्नल। प्रभुपाद ने वहां क्या लिखा है, सोल इज एटर्नल, देयरफॉर कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल इज आल्सो एटर्नल। और प्रभुपाद यहां चक्रवर्ती पाद क्या लिखते हैं, भगवान नित्य है, तो जब भगवान पे अपना चेतना केंद्रित करेगा वो भी नित्य हो जाएगी। तो सोल नित्य है, जब प्यूरिफाई हो जाएगा तो कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो जाएगी, तो नित्य हो जाएगी। कैसे होगी, जब वो एटर्नल लॉर्ड भगवान का ध्यान करेगा तो भगवान नित्य है, तो उसका ध्यान भी नित्य हो जाएगा, दोनों नित्य लगेंगे। सोल आल्सो नित्य है और भगवान भी नित्य है। सोल जब भगवान की सेवा में लगेगा तो उसकी चेतना नित्य हो जाए। Pure soul, when engaged in the pure loving service of the super soul or supreme Lord, then his consciousness become eternal. Eternal soul, eternal super soul या कृष्ण की सेवा में लगेगा तो उसकी कॉन्शियसनेस अल्टीमेटली सुपर कॉन्शियसनेस हो जाएगी। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो परफेक्ट होगा, और वो भी भगवान की कृपा से। श्रील प्रभुपाद का डिवोशनल सर्विस रेंडर्ड टू द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नेवर गोज इन वेन। भक्ति कभी नाश नहीं होती। सिंस द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज एटर्नल, इंटेलिजेंट, इज एटर्नल, intelligence applied in his service or anything done in his relation is also permanent। अब प्रभुपाद वही कहते हैं, भगवान नित्य है तो बुद्धि नित्य में लगाएंगे तो हम भी नित्य हो जाएंगे। In Bhagavad Gita it is said that such transcendental service render unto the personality of God, it accumulate birth after birth, and when the devotee is fully matured, the total service counted together makes him eligible to enter into the association of personality of Godhead. Such accumulation of God's service is never vanquished but increases till fully matured। ये कहाँ है भगवद गीता में? ऐसा कोई श्लोक है क्या? पढ़ देखिए, पढ़िए सर, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। In the Bhagavad Gita it is said that such transcendental loving service rendered on personal God accumulated birth after birth, and when the devotee is fully matured, the total service counted together makes him eligible to enter into the essential personal Godhead. Such accumulation of this service is never vanquished, but increases till fully mature. Huh?
बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा चतुर्लोक। बहुत जन्मों से आस्ते आस्ते भक्ति इकट्ठी करेगा, जब भगवान श्री कृष्ण को पाएगा। ये तो है ज्ञानियों के लिए। और नेहा विद्या ये तो हमारी भक्ति कभी नाश नहीं होती। ऐसे छठे अध्याय में भी अनेक जन्म संसिद्धि, बहुत जन्मों की, ये जो 2-4 श्लोक है ना, जो अनसक्सेसफुल योगी, तो अनसक्सेसफुल योगी बाय रिपीटेड प्रैक्टिस ग्रेजुअली गोज ऑन अक्यूमुलेटिंग अनेक जन्म संसिद्धि, बहुत जन्मों की संसिद्धि के बाद मुझे प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी के मन में छठे अध्याय का श्लोक है या ये 7वें अध्याय का श्लोक है, दोनों में बहुजन्म है। हाँ, वो नहीं है मनुष्य नाम से क्वेश्चन मापसिद्धि, वो नहीं है। ये इन दोनों में से है। अनेक जन्म संसिद्धिम बहुनाम जन्मनाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मनाम ते द्वंद्वोक्ता भजनते माम दृढ़व्रता, ये भी नहीं है। वो दोनों है छठे और 7वें अध्याय का। छठे अध्याय में बहुत जन्मों के बाद आस्ते आस्ते जैसे उसकी पक्की होता जाएगा तो फिर मेरे पास आएगा। और ज्ञानी भी बहुत जन्मों के बाद जब सिद्धि को प्राप्त करेगा तब मेरे पास आएगा। तो ये 2 जगह पे आप कह सकते हैं ऐसे है। और इससे आप आज ये सीख के जाएं प्रचार के लिए, ज्ञान के रास्ते में जाओगे तो भी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, अनेक जन्म संसिद्धि। योग का रास्ता अपनाओगे तो भी अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, अनेक जन्म संसिद्धि। कर्म के रास्ते में तो कभी भगवान मिलेगा ही नहीं। जब योग में नहीं मिलता है, ज्ञान में बहुत जन्म लगते हैं, योग में बहुत जन्म लगते हैं, तो कर्मी को कब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भक्त को 12वें अध्याय में लिखा है, भवामी निचरात पारत मई आवेशित चित्सम, इसी जन्म में मैं उसको भवसागर से स्वयं आके ले जाता हूं। तो प्रचार में कहना है कि ज्ञान में मत जाओ, बहुत जन्म लगेंगे, योग में मत जाओ, बहुत जन्म लगेंगे। कर्म तो कभी भगवान की प्राप्ति का साधन है ही नहीं, इसलिए केवल भक्ति ही इस जन्म में मुक्ति दे सकती है। ये भगवद गीता का दर्शन। 25 एतावदा उक्तवा उपराम तन्महत् भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां मह्यसे शिष्णावन्तामहं विदधते अनुकंपिता। Of then that supreme authority, personified by sound and unseen by eyes, Alingai, but most wonderful, started speaking, feeling a sense of gratitude. I offered my obeisance unto him, bowing my head. इतना कह के भगवान ने, whose words are the highest proof, whose words appeared in the sky, who was not visible to the eyes, and who was capable of bestowing mercy to the most fallen boy. The Lord started speaking. Receiving his mercy, I lowered my head to the greatest of the great. Etavad ukta means speaking. Uparama means stop speaking. In this way, he stopped speaking. Tan mahadbhutam namo. That where was that speech? Akashvani, Namo, in the sky. Nabho lingam, alingam Ishwaram. I cannot see him. That was Ishwar. Aham cha tasmai mahatam mahiyase, he was the greatest of great. Shirshavantam, I bowed down, viddhate anukampitaha, because he bestowed his mercy, anukampa. महद्भूतम is a name of the Lord. महद्भूतम ना भगवान का नाम है. In the neuter gender, the Shruti said, Asya Mahato Bhutasya Nyaha Shavasitam Etat Rig Veda. Rigved में
The breathing of Lord called Adhbhut. Breathing of the Lord is called Adhbhut. तो भगवान का नाम है महद्भूत। भगवान के श्वास लेने को महद्भूत ऋग्वेद में कहा गया है, बृहदारण्य के उपनिषद। Since his breathing is the four Vedas, his words are the highest proof. Mahato Maityam. Because his breathing is Veda. That is the final authority. Since he gave blessing even to me, the low-born son of a maid servant, he is called the one supreme Lord Ishvara, one who is capable. Since the Lord left a trace in the ether in the form of his speaking to Narada, he is called Namo Lingam. भगवान अपना आवाज आकाश में छोड़ा तो नभो लिंगम. He is called Alingam because he is not visible to the eyes. That person of Godhead was not seen, Alingam, but only heard, Nabho Lingam. Does not make any difference. Personality of Godhead produced the four Vedas by his breathing. That is a Bhuta Mad Bhava. And he is seen and realized through the transcendental sound of the Vedas. Similarly, Bhagavad Gita is sound revelation of Lord. And there is no difference in the identity. The conclusion is that the Lord can be seen and heard by the persistent chanting of the transcendental sound. 26. Namani anantasya tatrepta pathan goyani bhadrani kirtani cha sumran gana priyatan stushta managataspra kalam pradiksham vimadho vimatsara. ये नारद अब अपना भगवान की वाणी सुनने के बाद अपनी बातें नामानी अनंत से, अनंत के नाम, हत तृप्त पठन, पढ़ने से कभी तृप्ति नहीं होती है, पढ़ा गोह्यानी भद्राणी, बहुत गोपनीय है, बहुत मंगलकारी है, कीर्तानी च स्मरण, उसका स्मरण करना, उसका कीर्तन करना, गाम पर्यंतन स्तुष्ट मना, मैं संतुष्ट होके गान करने लगा, गत स्प्राव, कोई इच्छा नहीं रह गई, कालम प्रतीक्षा, मैं इंतजार कर रहा था ये शरीर कब छूटे, विमदो, मुझे कोई अहंकार नहीं था कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया, विमत्सर, मुझे भगवान से कोई ईर्ष्या भी नहीं थी। तो दो बड़े गुण थे, मुझे मद नहीं था, मुझे ईर्ष्या नहीं थी। आई वॉज नॉट, प्रभुपाद लिखा है, विदाउट बीइंग प्राउड एंड विदाउट बीइंग एनवियस. Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeatedly reciting, ignoring all formalities of material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastime of Lord are all benefactory. So doing, I travel all over the world and fully satisfied and free from pride and envy. Giving up shyness, I began to chant the names of unlimited Lord, Anantasya Namani, and to remember his most excellent hidden pastime, Guyani. I wandered the earth with satisfied mind, Triptamana, without material desire, Nisispra, without pride, Mada, Vimada, and selfishness, enviousness, waiting for the time. तो पहला गिविंग अप शाइनेस किस शब्द का अर्थ होगा? हत तृप्त पठन, हत तृप्त. हत तृप्त का अर्थ प्रभुपाद ने क्या लिखा है? बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम शाइनेस. क्यों बाजार में जाके आप गाएंगे, नाचे तो आपको लज्जा आएगी ना, तो लज्जा मैंने छोड़ दी. ये प्रभुपाद ने 3 जब कपल भेजे थे इंग्लैंड तो उनको कहा कि लज्जा छोड़ के गाना जाकर, तो मैं लज्जा छोड़ के गाने लगा. हत तृप्त का अर्थ है ये. मैं आइडिया दे रहा हूं कि पढ़ना कैसे चाहिए आपको, ऊपर नीचे देखना चाहिए शब्द कौन सा प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन में लिखा है, कौन से शब्द के लिए लिखा है, ये देखना चाहिए थोड़ा. कीर्तन रेफर्स टू लॉर्ड्स पास्ट टाइम, कीर्ति भगवान की. कालम प्रतीक्षम, expecting the time, means when will that time come when I will become an associate of Lord.
इंतजार कर रहा था भगवान के पार्षद बनने का। I had no pride or selfishness since I always thought who is more fallen than I. मुझे अहंकार भी नहीं था, मुझे ईर्ष्या भी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आप को छोटा सा बच्चा ही मान रहा था, एक गरीब दासी का पुत्र। तो ये हाउ फॉलन आई एम, ये इसको कहते हैं हम्बलनेस। The life of a sincere devotee of Lord is thus explained in a nutshell by Narad Muni. Life of a sincere devotee is expressed here by his personal example. Such a devotee, after his initiation by the Lord or his bona fide spiritual representative, takes very seriously chanting of the glories of the Lord, number one. Number two, traveling all over the world so that others may also hear the glories of Lord. Such devotees have no desire to material gain. Three, they are conducted by one single desire to go back to Godhead. ये कौन से शब्द के लिए है? कालम प्रतिष्ठा, काल का was waiting to associate with Lord. They are conducted by one single desire. Okay, this awaits them in due course on quitting the material body, because they have the highest aim of life, going back to God. They are never envious of any money. Four, nor are they proud of being eligible to go back to God. Their only business is to chant and remember the holy name, fame, pastime of Lord, and according to the personal capacity, to distribute the message for others' welfare without motive of material gain. So ये purport आप personal application में देखिए कि after initiation are we doing like this? ये ऐसा purport है उसमें प्रभुपाद ने कहा life of a sincere devotee. This is example of life of a sincere devotee. तो 5 एक पॉइंट हैं जो हर डिवोटी की लाइफ में सक्सेस के लिए नेसेसरी है। पहला खुद जपे, दूसरा दूसरों को जपाए, एंड ट्रेवल करे और प्रचार करे, अहंकार न करे, मद न करे, एनवियस न हो, ईर्ष्या न करे, और गोल भगवान की प्राप्ति का रखे। ये 5-6 पॉइंट इस पर्पट में इंपॉर्टेंट है। एवं कृष्ण मते ब्राह्मण आसक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदा मणि यथा। अब नारद का मटेरियल बॉडी फिनिश हो रही है, स्पिरिचुअल बॉडी साइमल्टेनियसली मिल रही है, बिजली चमके और रोशनी के साथ। एंड सो ओ ब्राह्मण व्यासदेव, in due course of time, I, who was fully absorbed in thinking of Lord, evam Krishna mate, thinking of Krishna, fully absorbed in thinking of Krishna mate, and who therefore had no attachment, na asakta, I was not attached, being completely free from all material tenets, asakta, asya amalatmana, amala means free from all material tenets, amal, atmana in a mind, made with death, as lightning and illumination occur simultaneously. Tadita, which means lightning, Sodamani means illumination. O Brahman Vyas, concentrating only on Krishna, not attached to material enjoyment, and pure in mind, Amal mind, Atma. The time of receiving my spiritual body occurred simultaneously with that of giving up my material body, like lightning flashing simultaneously with lightning. इसका मतलब फ्लैश ऑफ लाइफ में एक बॉडी गई, दूसरी बॉडी मिल गई। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्विंग माय सटल एंड ग्रास बॉडीज, काले मीन्स टाइम,
At that time, kale kalha. Kale means dissolving my subtle body and gross body. The time, kala, that I was awaiting for expectantly for a long time made its appearance. मतलब बहुत समय से इंतजार कर रहा था और टाइम आ गया. That is the meaning. It is like saying the time when the king went was the time he arrived. यहाँ गया वहां पहुंच गया. राजा को कौन रोक सकता है रास्ते में? लाइट रेड लाइट थी नहीं. यहाँ से निकला वहां पहुंच गया. ये बॉडी छोड़ी, वो बॉडी मिल गई. It is said that the intelligence, even when identical with Lord, completely being non-different, it still has the ability to make distinction. But this case was different. Intelligence could not make a distinction. Suddenly the two times, disappearance of the material body and attainment of the spiritual body, simultaneously made their appearance, connected closely like subject and predicate. An example is given. It is like simultaneously of lightning with the another flash of lightning. Just as sometimes lightning appears at the same time as another flash of lightning. Similarly, as the exact time of giving up my material body, the time for receiving my spiritual body is an associate also occurred. तो ये तड़ित और सुधामणि शब्द की परिभाषा लंबी दी हुई है. जनरली हम ये बॉडी छोड़ते हैं, हमारी सेटल बॉडी रहती है, सेटल बॉडी को एनालाइज किया जाता है, फिर दूसरी बॉडी मिलती है, इसमें टाइम लगता है. लेकिन नारद हैज गिवन अप हिज बोथ बॉडीज एंड इमीडिएटली गॉट हिज स्पिरिचुअल बॉडी. इट इज लाइक कभी एक बिजली और साथ में दूसरी बिजली चमक गई. टू साइमल्टेनियसली एक बॉडी गई, दूसरी मिल गई. So to be fully absorbed in thought of Krishna means clearance of material dirts or hankering. As a very rich man has no hankering for small petty things, so also a devotee of Krishna who is guaranteed to pass on to the kingdom of God, where life is eternal, fully cognizant and blissful, naturally has no hankering for petty material things, which are like dolls or shadows of reality and are without permanent value. That is the sign of a spiritually enriched person. In due course of time, when a pure devotee is completely prepared, all of a sudden the change of body occurs, which is commonly called death. And for the pure devotee, such a change takes place exactly like lightning and illumination follows simultaneously. That is to say, a devotee simultaneously changes his material body and develops a spiritual body by the will of the Supreme. Even before death, a pure devotee has no material affection due to his body being spiritualized like a red hot iron in contact with fire. So Prabhupada's purport basically, fully absorbed in thought of Krishna has no material dirt, and therefore he is eligible to go back to Godhead. So in this life, when he leaves the body, he goes and becomes associate of Supreme Lord. 28. Priyojamane mahitam suddham bhagavatim tanum arabdha karma nirvano Nayapatta Panchabhutaika. Having been awarded the transcendental body befitting an associate person of Godhead, I quit the body made of the five material elements, and thus all acquired fruitive result of the work karma is stopped. Chakravarti Pad writes, the Lord previously promised, Hitva avadhyam imam lokam ganta majjantamasi. ये भगवान ने कहा था आप मेरे एसोसिएट बनोगे और आपको ये स्मृति बनी रहेगी. 23rd वर्ष का है. At the time of being made to accept the body which was Shuddha Sattva, Shuddham, because it was not material body and because it belonged to the Lord Bhagavati, my material body Panchabhautika fell away. Giving up my material body and attaining a spiritual body were simultaneous.
Like the expression, I am walking while the cows are being milked. मैं जा रहा हूं, गाय से दूध निकाला जा रहा है. Both are simultaneously. So एक शरीर गया, दूसरा मिल गया. The Lord's own words are hitva avadyam imam lokam. The use of the verb from hitva, giving up the material body, in this case indicate simultaneously giving up the material body while receiving the spiritual body. It is said, this is the verse, Bhasha Vritti. There are examples in which the participant indicates simultaneous action, as in sitting down and eating, assuming dates and falling from esteem, closing the eyes and laughing, lowering the head and falling asleep. तो एक ही समय में दो काम हो रहे हैं, दो काम एक समय में साथ. बैठ के खाने, बैठा खाने लगा, शरीर एक छोड़ा, दूसरा शरीर मिल गया. ये ऐसे क्यों लिखा है इतना ज्यादा? क्योंकि नॉर्मली ऐसे नहीं होता, दूसरे शरीर मिलने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ कोई टाइम नहीं लगा है, क्विकली हो गया, क्योंकि उसका सटल बॉडी ही नहीं था. श्रीधर स्वामी सेज, अनेन पार्षद तनुनाम अकर्मार बद्धत्वम शुद्धत्वम नित्यत्वम इति आदि सूचितम भवति. What is said in this verse is that the bodies of the associate of Lord are pure without prarabdha karma and eternal. Bhagavatam, such power is not surprising from persons who have conquered the six senses by the dust from the Lord's feet of Lord, since even an outcast become immediately free of bondage of karma by chanting the name at once. Here is the meaning of the verse. This is not so amazing for such type of person. What should be amazing? Even an outcast, Vidur, Vigatta, who chants the name of the Lord once, now at the time of accepting the name, gives up his body, Tanu. Since we do not see anyone giving up their body simultaneously with chanting, body here means his prarabdha karma. शरीर छोड़ना मतलब प्रारब्ध कर्म खत्म हो गया, अब कोई नया भोगना ही नहीं. The meaning giving up body means burning all the prarabdha karma. This is the opinion of some. Others say by association of bhakti, like the touchstone, the body made of three gunas become free of guna, as seen in the case of Dhruva. ध्रुव महाराज उसी शरीर में गया था ना, काल के सर के ऊपर पांव रख के. ऐसे हमारे सन्यासियों का भी अग्नि संस्कार नहीं होता है. समझते हैं कि उन्होंने बॉडी को प्यूरिफाई कर लिया, उनको समाधि दी जाती है. हरे कृष्णा. सन्यासियों को समाधि दी जाती है कि उसकी बॉडी में कोई आसक्ति, दे डोंट हैव अटैचमेंट टू द बॉडी, देयर बॉडी माइंड एंड वर्ड्स आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सुप्रीम लॉर्ड. तो उसको उसी शरीर को ही जो है समाधि दी जाती है बिठा के. वो सुलाया भी नहीं जाता है, बिठा के रखते हैं और उसको कहते हैं ये तो भगवत धाम जा रहा है. इसके शरीर प्यूरिफाई हो गया. प्रॉपर एग्जाम्पल दिया, लाइक रेड आयरन बिकम फायर in contact with fire. Giving up body means giving up the body made up of three gunas. बहुत लंबा पर पढ़े चक्रवर्ती पाल ने, लंबा बहुत लंबा किया. श्री प्रभुपाद पर पढ़. Informed by the personal Godhead that he would be awarded the transcendental body befitting Lord's associate. Verse number 23. Lord God is a spiritual body as soon as he created his material body. This transcendental body is free from material affinity and invested with three primary transcendental qualities, namely eternity, freedom and from the material modes, and freedom from reaction of fruitive activities. अब ये बातें याद करने की है. शुद्ध जो शरीर है, शुद्ध सत्व, उसमें क्या नहीं होता है? This transcendental body is free from material affinity
Namely, what is that? Eternity, freedom from material modes, and freedom from reaction of fruitive activities. The material body is always afflicted with the lack of these three qualities. तो इसका मतलब भौतिक शरीर में तीन दोष होते हैं जो शुद्ध देह में नहीं होते। वो क्या है? फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल मोड्स, दूसरा है रिएक्शन ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब प्रारब्ध कर्म, और पहला क्या है? एटर्निटी। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्रभुपाद जी का परपट क्या कह रहा है? दिस ट्रांसेंडेंट बॉडी इज फ्री फ्रॉम मटेरियल एफिनिटी and invested with three primary transcendental qualities, namely eternity, ये eternal body है, अभी दोबारा बदलनी नहीं है, हमेशा के लिए रहेगी, इसका जन्म मृत्यु नहीं होगा, ये शुद्ध body है, शुद्ध देह है। Freedom from material modes, it's not influenced by the three modes of material nature, and freedom from reaction of fruitive activities. Now there is no prarabdha karma to continue, so it's free from these three. ये spiritual body की qualification है, और ये मटेरियल बॉडी में नहीं होती। The material body is always afflicted with lack of these three qualities. तो ये तीन क्वालिटीज को याद करके रखना है मेमोरी के लिए। शुद्ध देह में ये तीन चीजें नहीं होती हैं और मटेरियल बॉडी में ये तीन चीजें होती हैं। A devotee's body become at once surcharged with transcendental qualities as soon as he is engaged in devotional service. It acts like the magnetic influence of touchstone upon iron. The influence of the transcendental devotional service is like that. Therefore, change of body means a stoppage of the reaction of three qualitative modes of material nature upon the pure devotee. इसका मतलब भक्ति से तीनों गुणों से ऊपर जाता है। कौन सा श्लोक याद आ रहा है? अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतयितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो ये दो श्लोक यहाँ रख के देखेंगे कि भक्त तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, और क्योंकि फिर उसके बाद वो शुद्ध भक्ति करता है शुद्ध देह में या ब्रह्म स्तर के ऊपर। इसका मतलब ब्रह्म साक्षात्कार के बाद शुद्ध भक्ति शुरू होती है। अपने आप को ब्रह्मभूत समझेगा, उसके बाद शुद्ध भक्ति स्टार्ट आफ्टर दैट। ओके, the influence of transcendental devotional service is like that. Therefore, change of body means establish a reaction of three qualitative modes of material nature upon pure. There are many instances of this in the revealed scripture. Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj and many other devotees are able to see the personality of God at face to face, apparently in the same body. तो अभी देखें, अब नारद ने देखा भगवान को हृदय में, ध्रुव महाराज ने देखा, प्रहलाद ने देखा। So they are example in this body they have seen the Lord. This means that the quality of devotee's body changes from material to transcendence. That is the opinion of authorized Goswami via authentic scripture. In Brahma Samhita it is said that beginning from Indra Gop jump to the great Indra, king of heaven, all living entities subject to law of karma and are bound to suffer and enjoy the full result of their work. Only devotees exempt from such reaction. Indra Gop. भक्ति भाजाम इसमें है ना, कर्माणि नधि भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुष। तो बाकी सबको कर्म भोगने पड़ते हैं, ओनली डिवोटी इज फ्री फ्रॉम कर्म। ये कैसे होगा? ओनली डिवोटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सच रिएक्शन बाय द causeless mercy of Supreme Lord. Verse 29. कल्पान्त इदम् आदाय श्याने अम्बसे उद्धवः उदन्वतः शिष्यो शोर अनो प्राणम विवशे अंत अहम विभो। एक और क्वेश्चन है यहाँ, आप ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हुए?
आपको तो शरीर मिल गया ना, पहले ही भगवान ने दे दिया, फिर ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए? तो ये श्लोक कहता है, एट द एंड ऑफ मिलियनम, when the personality Godhead Lord Narayan lay down within the world of the devastation, Brahma began to enter into him along with all the creative elements, and also I entered through his breathing. So ब्रह्मा और ये सृष्टि सारी भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु में चली गई। दोबारा जब क्रिएशन हुई तब मैं ब्रह्मा जी का बेटा होके पैदा हुआ। स्पिरिचुअल बॉडी मुझे पहले ही मिल गई थी, लेकिन ब्रह्मा जी का बेटा कैसे हुआ? नेक्स्ट ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में मैं ब्रह्मा जी के साथ पहले भगवान के पेट में चला गया, एंड देन आई केम बैक एट द एंड ऑफ कल्प व्हेन ब्रह्मा withdrew the universe with his breathing. I entered into Brahma, who desired to sleep in Narayan, who was lying on the wall of only ocean. चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, that is true. Oh, if you have an eternal body, then why are you now to be born from Brahma in this स्वयंभू मनवंतर? इसका मतलब ब्रह्मा स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी का बेटा हुआ। तुम्हारी एटर्नल बॉडी है, फिर ब्रह्मा का बेटा क्यों हुआ? इट इज सेड, उत्संगाम नारदो जगने, नारद वाज बॉर्न फ्रॉम द डेलिब्रेशन ऑफ ब्रह्मा। हृदय से पैदा हुआ है ब्रह्मा के, which is best part of the body, थर्ड कैंटो में है। That is true. Just as the Lord for his particular pastime entered the womb of Devaki, अरे भगवान तो नित्य है, पर देवकी का पुत्र कैसे होता है? लीला के लिए। From the pastime of being the son of Brahma, at the end of the previous kalpa, previous day, I entered the body of Brahma. When Brahma withdrew the three worlds, Idam I entered along with his breathing into Brahma, who desired to go to sleep in Narayan, Shyani, who was sleeping in the water of the only ocean, Udvantavaha. Having appeared, Brahma entering the body of Vishnu, becoming one with Vishnu, then went into the Vishnu's spiritual sleep, Kurma Purana. Okay, Prabhupada's purport. Narad is now the son of Brahma, as the Lord Krishna is known as son of Vasudeva. Prabhupada taking same purport in a question answer nahi diya hai Prabhupada ne, but you can see this question. The personality Godhead and his liberated devotees like Narad appear in the material world by same process. Same process means Leela. As it is said in the Bhagavad Gita, the birth and activities of all transcendental. Janva karam cha me devya. Therefore, according to authorized opinion, the birth of the Narad as the son of Brahma is also a transcendental pastime. Ye bhi Leela hai. His appearance and disappearance are practically on the same level as the Lord. The Lord and his devotees are therefore simultaneously one and different as the spiritual entities. They belong to the same category of transcendence. Verse 30. Sahas yuga paryante uthaye dam sisrikshata marichihi mishra rishya pranebhyo aham cha jagnare. Next kalp. 1000 युगों के बाद 8वें अध्याय में, जैसे भगवत गीता में है ना, सहस्र युग पर्यंत हर आग में, तो वो ब्रह्मा जी की रात पूरी हुई, दिन हुआ. सो आफ्टर 4 ट्रिलियन मिलियन गिन लो, हाँ 43 करोड़ नहीं है, 4 अरब 30 करोड़ होगा, 4 अरब 30 करोड़ है. 16 years when Brahma woke to create again by the will of Lord, all the rishis like Marichi, Angira, Atri and so on were created from the transcendental body of the Lord, and I also appeared along with them. At the end of 1000 yuga cycle means at the end of previous kalp and beginning of this kalp, Marichi and other sages, I was born from the senses of Brahma. Note, Jiva Goswami explained that their birth is actually awakening from sleep only.
Nard has an eternal body, but sometimes special jivas take up the form of Nard as well. कभी कभी नारद की शरीर कुछ जीव लेते हैं, श्रीवास नारद, कभी दूसरा जीव भी नारद के शरीर में आ सकता है। श्रीवास आचार्य को जीव नारद जी कहते हैं। जिग्न इंस्टेड ऑफ दिस जनी महीने पढ़ गए। ड्यूरेशन ऑफ डे ऑफ ब्रह्मा 4 अरब 30 करोड़ 32 करोड़। एज स्टेड इन भगवद गीता 8th चैप्टर, ये भगवद गीता के 8th चैप्टर में है। एंड फॉर द सेम पीरियड ब्रह्मा जी रेस्ट एट नाइट, योग निद्रा। सेम थिंग, भगवान का आना जाना सेम है, सेम थिंग एक्चुअली। 31 अंतर्बहिश्च लोकांतरिं प्रियमेह अस्कंदितः वृत्तः अनुग्रहान् महाविष्णो अविघात गतैः क्वचित्। Since then, by the grace of Almighty Vishnu, I travel everywhere without restriction, both in the transcendental world and the division of the material world. This is because I am fixed in unbroken devotional service unto the Lord. अब ये कंक्लूजन वाला सेक्शन है, नारद भक्ति की महिमा गाएंगे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, I am not like Marichi and other sages with material bodies, under the influence of their own karma, involved in karma yoga, nor like the Kumaras involved in gyaan. I am above the path of material engagement and renunciation. I worship Lord and exist independently. This is expressed in this verse. Those who are karma yogis do not go beyond universe. Those who have attained Brahma by very difficult aspects do not go into the material universe, but out of fear of bondage of karma. But I fixed in continuous devotion to Lord travel outside and inside the universe. Or outside can mean I travel outside the universe to Vaikuntha. This it is it. What it means is, Marichi Adi Rishis, they have material bodies. They cannot go to spiritual world. Kumara, they are in Gyan. They don't want to come to material world because they don't want to get bondage. But I am free. I can go anywhere. I am not afraid of karma. I can go in the material world. I am not afraid of going in the material world, and I can go also to the spiritual world because my body is transcendental. The Kumaras are on the path of detachment, and Marichi and others are engaged in the path of material life. Only Narad is liberated, Narsinga Puran. This is the quotation from Narsinga Puran. Srila Prabhupada's purport. As stated in Bhagavad Gita, there are 3 divisions of material spheres, namely Urdhvalok, Madhyalok, Adhalok. कहाँ है भगवद गीता में? सत्वया ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जुगन गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा. The 3 planetary system. Okay. Beyond the Urdhva Lok planet is to say above the Brahma Lok are the material coverings of the universe, and above that is spiritual sky, which is unlimited in expansion, containing unlimited self-limited Vaikuntha planet inhabited by God himself along with his associates, who are all eternally liberated living entities. Narada Muni could enter all these planets, both the material and spiritual world, without restriction, as much as the Almighty Lord is free to move personally in any part of his creation. In the material world, the living entities are influenced by the 3 modes of material nature. But Sri Narada Muni is transferred to all these material modes. Okay, the causeless mercy of Vishnu is unparalleled, and such mercy is perceived by the devotees only by the grace of Lord. Therefore, devotees never fall down, but the materialists, that is, the fruitive worker and the spiritual philosophers. Prabhupada ने वो अंगिरा और कुमारों को लिख दिया है, fruitive worker and speculative, ज्ञानी और कर्मी को यहाँ Prabhupada is paraphrased like that.
being forced by their respective modes of nature. The rishis, as above mentioned, cannot enter into the transcendental world like Narad. Angira आदि नहीं जाएंगे क्योंकि material body. This fact is disclosed in Nrsimha Purana. अभी हमने पढ़ा. The rishi like Marichan are authorities in fruitive work. Rishi like Sanak and Sanatan are authorized in philosophical gyaan. But Sri Narad Muni is primary authority in transcendental devotion service. All the great authority and devotion service of the Lord follow in the footsteps of Narad Muni. In honor of the Narada Bhakti Sutra. Therefore, all the devotees of the Lord are unhesitantly qualified to enter into the kingdom of Vaikuntha. नारद कहाँ अभी इस वक्त नारद नारद का इस भौतिक जगत में कहाँ स्थान है? राधा कुंड में भी नारद कुंड है. राधा कुंड के सामने नारद कुंड है. कुछ समय नारद वहां रहे हैं. जनरली नारद इज कंसिडर्ड वर्शिपिंग नर नारायण एंड बद्रिक आश्रम. हिज इन दिस प्लानेट नारद मुनि 6 महीने जब बंद होता है बद्रिक आश्रम तो नारद ऋषि पूजा करता है नारायण बद्रिक आश्रम में नारायण की. वो उनका गुरु स्थान है. नारद जी का गुरु स्थान बद्रिक आश्रम है. वहां वो नारायण का नित्य सेवक है और घूमता फिरता रहता है, लेकिन वो उसका गुरु स्थान है. देवदत्तामिमां वीणां सर्व ब्रह्म विभूषितां मूर्छयत्वा हरि कथां गायमानश्चराम्याम्. And thus I travel constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord. Vibrant this instrument called veena, which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. वो आपने पूछा था ना वीणा किसने दी? प्रभुपाद ने सीधा लिखा है वीणा इज गिवन बाय कृष्ण. इसमें लिखा है देवदत्ता. प्लेइंग प्लेइंग मूर्छना. मूर्छना मूर्छन का मतलब दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रागा. मूर्छन एंड आलाप ऑन द वीणा, different tunes by the Lord, given by the Lord, using 7 sacred notes of the scale, Sara, Gama, Pa. I wander about singing the glories of Lord. Nard has a Nard's paraphernalia not available for any other person in material world. Is also constantly with him at all times, wherever he goes. There is explained 2 verses. Veena was given by Krishna.
हाँ, लगता है मर गया है, भरा हुआ था, चालू नहीं किया है, पता नहीं। यस ये हम जो गुरु परंपरा में हम यस जी यस, हाँ जी। नारद जी को जब उनका बॉडी ट्रांसफर हुआ उससे पहले ही उनको शुद्ध देह मिल चुका था। तो जब हम गुरु परंपरा में पढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी के बाद नारद जी का नाम आता है, और उनको तो पहले ही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिल चुका था और बॉडी मिल चुकी थी। एक कल्प के बाद दूसरा कल्प, तो उस कल्प में फिर लीला लिखा है, लीला। तो भगवान तो पहले भी थे, वसुदेव के वहां आए तो फिर शांति मुनि के पास पढ़ने गए कि उनके ज्ञान नहीं था क्या? भगवान तो ज्ञान पहले ही था, फिर क्यों गए शांति मुनि के पास पढ़ने? परंपरा को स्थापित करने के लिए, मर्यादा को स्थापित। व्यास को क्या जरूरत है नारद से सीखने की? वो भी तो भगवान का अवतार है, परंपरा का सम्मान रखने के लिए। अब ये प्रश्न है आपका, एक्सप्लेन हाउ वाज नारद मुनि वाज एबल टू रिमेम्बर हिज प्रीवियस लाइफ। दो वाज नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी डबल हो गई। एक्सप्लेन हाउ नारद मुनि वाज एबल टू रिमेम्बर हिज प्रीवियस लाइफ। Because of his the mercy of the Lord, he developed the constant remembrance of the Lord. And because Lord is eternal, so his remembrance is also eternal. And because his soul is eternal, so he has super mind and super consciousness. ये पूरी खिचड़ी बनाना 24वें श्लोक की और 4थे श्लोक की, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Special mercy of the Lord. 1:6:10. Explain this statement with reference to the previous life of Shri Narad Muni. केला इनाम है इसके ऊपर। यस, ये सिर्फ शब्द टेढ़े मेढ़े हैं, आंसर बहुत सिंपल है। हाँ, मदर मर गई परवाह नहीं है, ये आंसर इतना ही है। लिखा हुआ बहुत घुमा फिरा के है, आपका केला हो गया। आइए हमको नरसिंह देव के मंदिर से मिले। हरे कृष्ण। Third, give evidence from this section of Srimad Bhagavatam to substantiate the fact that in previous, present and the next creation, activities will remain as they are. Example was given that पहले भी एग्रीकल्चर गार्डन भी पहले थे, फॉरेस्ट भी पहले थे, गांव भी पहले थे, अब भी है, फ्यूचर में भी रहेंगे। नारद एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। पहले कल्प में थे, इस कल्प में, इसलिए बेकार का टाइम आर्कियोलॉजी में वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाइटल जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब नारद एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। और जब ध्यान में बैठा तो उसको क्या देखा उसने? हमने 3-4 चीजें दिखाई दी। भाव भक्ति हृदय में उत्पन्न हो गई, भगवान का सुंदर रूप देखा, और रूप देखने से 2 बातें होती है। कौन सी 2 बातें होती है? दुख का निवारण हो जाता है मन का, और मन संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, आंखों में आंसू आने लगे, और नारद बहुत ही आनंदित हो गया। ये श्लोक नंबर देख लो, श्लोक भी दे दिया है यहाँ, श्लोक नंबर 16-17। नारद के ध्यान का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ नारद इन मेडिटेशन। उसमें मेडिटेशन कैसे किया? जैसे उनके आचार्यों ने सिखाया था, और करने से उसको क्या अनुभव हुआ वो सब
लिखना है। Explain the following statement that the person regarded was not seen but only heard does not make any difference. There's no difference between the sound vibration of the Lord and Lord himself. Bhagavad Gita and Lord are non-different. So when Krishna was speaking to Lord, it was as good as seeing the Krishna. So seeing with eyes is not seeing, hearing is also seeing. So when we hear name of Krishna, it is also seeing Krishna. ये स्टेटमेंट कहाँ है? ये वर्ष नंबर दिया हुआ है 1625. नाम नामी अभिन्ना. Describe Nath's transcendental body and activities mentioned in verse number 27 and 28. नाथ की ट्रांसेंडेंटल बॉडी में क्या तीन चीजें नहीं हैं जो मटेरियल बॉडी में होती हैं, जो लिखा है वो बताना है. आज बता, तीन चीजें नहीं हैं. एटर्नल है, कोई कर्म फ्रूट एक्टिविटी नहीं है, थ्री मोड्स का इन्फ्लुएंस नहीं, और काम क्या करती है? गाता है, घूमता है, फिरता है, यदृच्छा. Explain the transcendental nature of Sri Nath Muni as described in verse number 31. क्या है 31 वर्ष में क्या लिखा है? हाँ जी, read the 31 verse. I traveled by assistance by the grace of the Almighty Vishnu. I traveled everywhere without restriction, both in the transcendental world and in the three dimensions of the material world. This is because I am fixed in unbroken devotional service of the Lord. Oh, explain the transcendental nature of the Nath Muni. So those who are karmis like Gemini, they cannot go to the spiritual world. Those who are jnani like Sanakadi, they are not interested in coming to the material world. But Narad is one who can go to the material as well as the spiritual world. So bhakti can only award that freedom. तो यहाँ हमारे क्लोज बुक के क्वेश्चन पूरे हुए. आप इसको कल बैठ के लिख लीजिए एक बार. You tomorrow you answer all these questions in your own homework. तो क्लास नहीं है, ये टाइम आप ये 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन लिख लीजिए, और बाकी आपको क्लोज बुक ओपन बुक में से 5 यहाँ पड़े हैं, एक वो करें ऐसे. कौन सा देना है? आपने कोई सिलेक्ट किया है या टास्क करें? प्रभु जी तीनों यूनिट में से एक ओबीओ है. तीनों चैप्टर से एक ओबीओ है. 3 से 1 देना है. अरे ये सभी पढ़ के लिखने चाहिए. एक तो एग्जाम के लिए है, जीवन भर के लिए सभी लिखने चाहिए. इसको एक बार एक्सपेरिमेंट कर लो तो अच्छा है. अब क्लोज बुक का आप फिर देखेंगे, ओपन बुक का फिर देखेंगे. मेरे ख्याल में तीनों चैप्टर पूरे हो जाए फिर देखते हैं. अब एक ये लिखना है तो अच्छा है. देखो ओपन बुक में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2. रेस्पॉन्ड विद रेफरेंस टू वर्स नंबर 174 to 8 वर्सेस एंड परपर्ट. 3 जवाब देना है ABC. ये हमको अच्छा लगता है, हम प्राय क्लासों में सदा इसी के ऊपर बोलते रहते हैं. 7 का 1 to 8 वर्सेस. 3 क्वेश्चन है ABC. ठीक है, धन्यवाद. मेरे घर में छुट्टी करो. बहुत मारा आपको. प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे. हरे कृष्णा मंत्र. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आपकी सैटरडे को क्लास
एक्सटेंडेड होगी आज उसमें प्रोसीजर बता देंगे। आप थोड़ा उस दिन ज्यादा कर लेंगे और कोई और दिन आपके पास है संडे को सवेरे